Hello students and welcome to my YouTube channel. So in this particular lecture we are going to study how do metals and non-metals react with one another. So before we begin, I would request you to kindly subscribe my channel so that you can get regular updates regarding any uploads of the videos, right? So here we discuss how metals and non-metals react, okay? So in some activities, we have seen that the reaction of metals with a number of reagents, you saw for water, then acids, so different materials you saw, oxygen, right? So why do metals react in this manner? So we will try to recall the concept of electronic configuration that we studied in class 9. Okay, and we learned about noble gases which have a completely filled valence shell, right? So because their valence shell is filled, so they show little chemical activity. Okay, so we therefore explain the reactivity of elements as a tendency to attain a completely filled valence shell. ठीक है, वैलेंस शेल को अपना फिल करने के एम से मेटल्स और नॉन मेटल्स आपस में रिएक्ट करेंगे. ठीक है, तो इनिशियली लेट्स हैव अ लुक एट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस एंड सम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, right? So if we see the table 3.3, it shows the electronic configurations of some elements, right? Suppose we see noble gases, helium. Helium has an atomic number of 2. So electronic configuration is KLMN shells, we write 2, right? Neon is 10 atomic number, so 2, 8 is the electronic configuration. Argon 18, so 2, 8, 8, right? तो आप इसका outermost shell देखो, K 2 में fill हो जाता है, it's filled. L 8 is filled. M 8 is filled. Okay, so these noble gases show very less reactivity and they are quite stable in nature. ठीक है, तो जिनकी ऑक्टेट कंप्लीट होती है मींस आउटरमोस्ट शेल कंप्लीटली फिल्ड होता है, सो दैट पर्टिकुलर लाइक एलिमेंट इज स्टेबल इन नेचर, राइट? नाउ लेट्स सी फॉर मेटल्स. मेटल्स में आप ऑब्जर्व करो, जैसे एटॉमिक नंबर सोडियम का 11 है, द कॉन्फ़िगरेशन इज 281, राइट? मैग्नीशियम इज 282. तो आप आउटरमोस्ट शेल अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो सोडियम में देखो 1, we are having in M shell it's 1, right? So 1 electron is there in mth shell, outermost shell. Magnesium 2, aluminium 3, potassium 1, calcium 2. Okay, तो ये क्या करेंगे, इस वन इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, अगर सपोज सोडियम इसको लूज करता है तो इसकी जो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी, 2 8 रह जाएगा. मैग्नीशियम ये आउटर मोस्ट वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है तो इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी 2 8, सो इट बिकम्स क्वाइट स्टेबल. ओके, सिमिलरली नॉन मेटल्स के लिए आप देखो, नॉन मेटल्स की कॉन्फ़िगरेशन बन रही है 25, 26, 27, 285, 286, 287. सपोज हम क्लोरीन के केस में देखें, यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है? तो अगर इसमें एक और इलेक्ट्रॉन आ जाए, ठीक है, तो 8 हो जाएंगे, तो इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी. तो नॉन मेटल्स ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और मेटल्स हमारे ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे बाय losing electrons, that we will see further in this lecture, right? So as we saw from table 3.3, sodium atom में 1 electron is there in the outermost shell, ठीक है? If it loses the electron from its MS shell, then its L shell now becomes outermost shell and it has a stable octet, ठीक है? Nucleus of this atom still has 11 protons, but the number of electrons now becomes 10. ठीक है, तो एक नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा सोडियम कैटायन पे. सो सोडियम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Na+ बाय लूजिंग एन इलेक्ट्रॉन. एंड क्लोरीन हमने देखा था 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटरमोस्ट शेल में, तो इसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन हमें मिल जाता है तो हमारी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी. ठीक है, तो सोडियम और क्लोरीन जब रिएक्ट करेंगे तो सोडियम विल लूज एन इलेक्ट्रॉन and that electron will be taken up by chlorine and both will complete their octet. So win-win situation for both the elements, right? So after gaining the electron, chlorine will become negatively charged, ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन्स थे 17 न्यूक्लियस के अंदर एंड इलेक्ट्रॉन्स अब 18 हो जाएंगे, ठीक है. सो इट बिकम्स क्लोराइड आयन, anion, negatively charged, Cl minus, right? So it's a give and take relationship. If you show it like this, Na becomes Na plus electron and Cl plus 1 electron gives Cl minus. अगर आप इसको डायग्रामेटिकली शो करना चाहते हो तो Na was having
1 इलेक्ट्रॉन आटोमोस शेल, वो हमने दिखाया है, और क्लोरीन के 7 हमने शो किए. And now this one is going towards chlorine, and now Na gets positively charged, Cl gets minus charge, right? So sodium and chloride ions, they are oppositely charged, they attract each other, and they are held by strong electrostatic forces of attraction, and they exist as sodium chloride NaCl. Okay, so sodium chloride does not exist as molecules but aggregates of oppositely charged ions. ठीक है, oppositely charged ions है, बहुत सारे Na plus होंगे, बहुत सारे Cl minus होंगे, and they are held together by electrostatic forces of attraction, right? सिमिलर वे में हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड. मैग्नीशियम में हमने इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी थी, 282 है, राइट? तो आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. सो इफ इट लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स इट विल बिकम Mg2+ एंड इट्स ऑक्टेट गेट्स कंप्लीटेड. सो दिस इज मैग्नीशियम कैटायन. ऐसे ही Cl का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 287, सो इट गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन, 288 हो जाएगी एंड इट्स ऑक्टेट इज कंप्लीट, तो ये क्लोराइड एनायन बन जाएगा. ठीक है. Now, you see, magnesium is losing 2 electrons and 1 chlorine atom is gaining 1 electron. So 2 chlorines we will take. ठीक है, मैग्नीशियम एक इसको दे देगा, एक इसको दे देगा, इसकी ऑक्टेट कंप्लीट, इसकी कंप्लीट, और मैग्नीशियम की भी ऑक्टेट कंप्लीट. सो इट्स Mg2+ एंड Cl minus whole twice. फाइन. सो ये भी हमारा कंपाउंड बन गया. So the compound formed in this manner by the transfer of electrons. This is very important. Transfer of electrons from a metal to a non-metal. These are called ionic compounds or electrovalent compounds. Right? So MgCl2 में हमारा cation क्या है? This is your cation, magnesium. And anion क्या है? Cl minus, chloride anion. Correct? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर. अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा रिवीजन की रिक्वायरमेंट है देन जस्ट गो थ्रू क्लास 9 लेक्चर्स ऑल्सो, जिससे आपका वो क्विक रिवीजन हो जाएगा. एंड डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स.